Carroll straight approach. So it has got 16 different parameters, left hand side and right hand side. Total 32. 16 this side, 13 this side. So 16 के दो टुकड़े हैं. Number one is source traits. Number two is surface traits. Source traits के अंदर there are 3 different traits and under surface there are 13. So let us discuss one by one what are the source traits and what are the surface traits. Left hand side of the source traits, very first one, which is reserved, and this side outgoing. What does it mean? If the person is reserved, obviously he will not be outgoing. So reserved meaning contained within themselves, within himself, and outgoing meaning outward. They would like to approach people, they would like to have go-get attitude, they would like to create something on their own, they would like to make things happen, they would like to take initiative, like that. Left hand side, it is more intellectual. Right hand side, less intellectual. I don't think I have to explain what is intellect. Number 3 is in the source trait is emotionally stable and emotionally not so stable. So what does it mean? Emotional quotient is very high. So when your emotional quotient is very high, when you're emotionally stable, you know when to say, when not to say. You know how much to say, how much not to say. You also know how much emotion you need to have control over yourself and how much you need to hold and how much you need to express. But whereas if you are emotionally unstable, that point in time, कभी हंस दोगे, कभी रो दोगे, कभी कुछ भी हो जाएगा. Let us move on to surface traits. Surface traits, number 1, first is this side humble, this side assertive. Assertive मतलब क्या है? थोड़ा aggressive, थोड़ा bold, थोड़ा firm. Humble meaning very nice, down to earth, soothing. Number 2, totally number 5, sober and happy-go-lucky. Sober meaning serious, happy-go-lucky meaning always happy. Number 3 is expedient and this side is conscientiousness. So in Big 5 we already discussed conscientiousness, which is consciousness plus science, that is diligent, obviously intellectual, visualization, long-term prediction, big-time prediction. And expedient meaning will give you some benefit under a condition. Little bit of self-centeredness, little bit of selfishness. With some condition, I'll give you benefit, otherwise I'll not give you the benefit. Number 4, shy and venturesome. Shy मतलब obviously बहुत ही लज्जित, बहुत ही reserved, बहुत ही अंदर, and venturesome meaning obviously outspoken, very forward, very confident, etc. Tough-minded, tender-minded. Tough-minded meaning ruthless, very little insensitive, little aggressive. किसको कितना बात कैसे बुरा लग जाए पता नहीं. They don't have any control and they are insensitive also. कि बुरा लगे तो लगे मेरे को क्या, like that attitude. And tender-minded meaning emotionally very stable. They understand empathetic, sympathy. They understand emotion really well. Next is trustworthy or trusting versus suspicious. Trustworthy, he can trust. He is loyal. His fidelity quotient is very very high. And suspicious meaning he'll have always doubt. He will doubt you. Very suspicious. जल्दी भरोसा नहीं करेंगे आप पे. Next is practical and imaginative. So these guys are logical, practical, analytical. Imaginative मतलब थोड़े से fantasy world में रहते हैं, थोड़े से imagination में रहते हैं, थोड़े से creative life पसंद है इनको. तो this practical is left brain dominant, and this one is imaginative is your right brain dominant. Next is forthright and astute. Forthright meaning outspoken, direct, very specific, to the point, get to the point very quickly. Astute meaning little clever, थोड़े cunning भी होते हैं, little clever. आप फटाफट इनको रीड नहीं कर सकते. वेरी मिस्टीरियस, वेरी डिफिकल्ट personality to understand. Next is self-assured and apprehensive. Self-assured meaning that I am really assured about myself, what I want, what I don't want, what are my likes, what are my dislikes. I am aware about my strengths and weaknesses and opportunity and threats. But apprehensive meaning unclear, clutter in the mind. कहाँ पे क्या है नहीं है, कुछ भी idea नहीं है. And they would like to have resistance whenever you're gonna say something to them. And फटाफट डिसीजन नहीं लेंगे, क्लैरिटी नहीं है माइंड में, अनक्लियर. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव एंड एक्सपेरिमेंटिंग. कंजर्वेटिव मतलब वेरी ओल्ड स्कूल, वही मेथड पे चलेंगे, वो इस पे चलेंगे, कुछ नया चीज ट्राई नहीं करेंगे. एक्सपेरिमेंटिंग मीनिंग दे विल ट्राई मेनी थिंग्स. देखिए कंजर्वेटिव होना अच्छी बात है, रिपीट, इट्स वेरी गुड टू हैव कंजर्वेटिव. एट द सेम टाइम इट हैज टू ब्लेंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग. जो हमारी कोर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, रूट है, कैरेक्टर है, वो कंजर्वेटिव होने ही चाहिए. ओल्ड स्कूल
बट न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स हमको एक्वायर करनी चाहिए, न्यू सारी चीज़ों में आपको हाथ डालना चाहिए, न्यू चीज़ों में आपको आइडियाज जनरेशन सब कुछ होनी चाहिए। और एक्सपेरिमेंटिंग, पूरा एक्सपेरिमेंट में जाओगे, खुद के जो बेस है, फाउंडेशन है, संस्कृति है, उसको भूल के, देन इट विल बी एब्सोल्युटली गॉनर। सो इट हैज टू बी ब्लेंड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड practical. It has to be blend of experimenting and old school, which is conservative. Group dependent and self-sufficient. Meaning what? किसी ने कुछ कर दिया तो मेरा होगा, नहीं किया तो नहीं होगा. But self-sufficient meaning I am independent, I am a go-getter, I can do on my own, I am a change maker, I am a transformer. So confidence level काफी हाई होता है जो self dependent होते हैं, एज इन खुद पे भरोसा होता है, और दूसरे जो है दूसरे पे भरोसा होता है. They are dependent on outside environment. Next is undisciplined self conflict versus controlled. सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट अगर होगी खुद में ही, अगर लेट्स से दो अलग अलग पर्सनालिटी के, फॉर एन एग्जांपल आउल एंड पीकॉक यहीं पे अगर है, या फिर ईगल एंड डव एक ही इंसान के अंदर है, तो देयर विल बी ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट, एवरी मोमेंट देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट. ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं. एक पर्सनालिटी बोलेंगे इधर जाओ, दूसरे पर्सनालिटी बोलेंगे इधर जाओ, बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट, वेरी क्लोज टू बाइपोलर. एट दिस साइड इज कंट्रोल, मीनिंग very good amount of ठहराव, only one vibe he is giving, very high level of control, very high level of ठहराव, calmness, very relaxed, very easy, very programmed, very practical, very pragmatic, at the same time blend of huge amount of imagination and visualization and prediction and leadership quality. Last but not least, relaxed versus tensed. So relaxed meaning very relaxed, easy, calm, emotionally बहुत अच्छी ठहराव है, calmness है. And tensed meaning is you are very panicking, कुछ भी हो जाए फटाफट आप टेंशन में आ जाते हो, बहुत ज्यादा टेंशन लेके रखते हो, एंड अननेसेसरी टेंशन लेके रखते हो, अननेसेसरी जो कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं जो कि कटिंग करनी बहुत जरूरी है, इनसे टेंशन उनसे टेंशन, सब जगह से टेंशन ले लेते हो आप. दैट इज टेंस. सो दैट्स ऑल अबाउट योर कैटल्स ट्रेड अप्रोच. आई विश यू ऑल द बेस्ट. ये वीडियो को फिर से घुमा फिरा के देखिए, और हर बार की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए और करवाने के लिए आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी वीडियो आ रही है. नेक्स्ट वीडियो, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.